Reactions are pouring in following a deadly suicide bombing at Imambargah Khadijah-tul-Kubra in Islamabad's Tarlai area during Friday prayers. At least 31 people were killed and 169 others were injured in the attack. Images from the scene showed bloodied worshippers lying on the carpeted floor, surrounded by debris and shards of glass, while dozens more wounded lay in the garden outside, calling for urgent help. Defense Minister Khwaja Asif spoke out on social media suggesting possible involvement by India and Afghanistan. He said the attacker had traveled to and from Afghanistan and that security personnel at the Imambargah had challenged him. The attacker then opened fire before detonating himself while standing in the last row of worshippers. The minister vowed that the state would respond to this act of cruelty with full force. Minister of State for Interior Talal Chaudhary clarified that the attacker was not Afghan but had indeed visited Afghanistan multiple times, according to forensic tests. Parliamentary Affairs Minister Tariq Fazal Chaudhary also pointed fingers at India, stating that the country had been involved in terrorism in Pakistan, including in Balochistan, Fata, and in this latest attack. He emphasized that Pakistan remains united against such cowardly acts and the fight against terrorism will continue until perpetrators are eliminated. इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हैं ये इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है कि आप सिविल आबादी को या उनकी इबादतगाहों को इस तरह निशाना बनाएं। ये पाकिस्तान के अमन के दुश्मन हैं और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं। जिस तरह हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस के इदारे वो इनका मुकाबला कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से दहशतगर्दी का कला कमा करना, इसका ख़ात्मा करना, ये हमारा टारगेट है। और पाकिस्तान में जब तक एक भी दहशतगर्द मौजूद है इनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, हम इस खत्ते में भी अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं और बिलखुसूस मैं इंडिया की बात करूँगा कि जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाज़ी हो रही है और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे बलूचिस्तान, फाटा और आज आपने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में ये वारदात हुई है, इसके पीछे उनका हाथ है और जो हमने पूरी दुनिया के सामने भी उन्हें एक्सपोज़ किया है। हम इस अज़म के साथ कि हमारी कौम मुत्तहद है इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, इस तरह के जो बुज़दिल दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए और इंशाअल्लाह इनके ख़ात्मे तक ये जंग इनके ख़िलाफ़ जारी रहेगी। Authorities confirmed that the injured and deceased were taken to PIMS and Polyclinic Hospital with emergencies declared across Islamabad. Among the dead was the cousin of Islamabad's Inspector General of Police Sayyid Ali Nasir Rizvi. Rescue 1122 and police teams responded immediately while the blast site was sealed off. Punjab Chief Minister Maryam Nawaz dispatched 21 ambulances and ensured hospitals across Rawalpindi were fully staffed with surgical teams, anesthetics and specialists. President Asif Ali Zardari, Prime Minister Shehbaz Sharif and Deputy Prime Minister Sardar all condemned the attack, calling it a heinous crime against humanity. They expressed grief for the victims, prayers for the injured and directed swift investigation and accountability. This attack comes less than 3 months after a suicide blast at Islamabad's G11 District Court in November 2025, which killed 12 and injured more than 30.